Hello everyone. So today we will start exercise 28. What is the first question? Find the quotient. Find the quotient when 21 divided by 3. So बेटा आपको 21 में 3 से डिवाइड करना है. So I am going to solve here solution. So 21 will be divided by 3. So 3 से कितने टाइम हो जाएगा ये बेटा? 3 to 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18, 3 7 21. 7 times 21 जाएगा. So you will write here 21 and here you will subtract 1 minus 1 0, 2 minus 2 equal to 0. This is called quotient and this is called remainder. Okay. So what is quotient here? Quotient equal to 7 and remainder equal to 0. So like this you have to write in each and every question. Okay. Now I am going to solve question number 17. Okay. What is question number 17? A man gives 12 bananas to 4 monkeys equally. A man gives 12 bananas to 4 monkeys equally. How many bananas does each monkey get? So you have to write the statements. How will you write the statements? Number of bananas. Number of bananas equal to 12. Number of monkeys. Number of monkeys equal to 4. Equals to 4. So last time you have to write total number of bananas each monkey will get. Each monkey will get. So you have to divide it. 12 divided by 4. 12 divided by 4. So division you have to show here. So what is your answer? 3. So you have to write here 3 answer and division you have to show in your fair copy. Division you have to also show and you have to write statements like this. Okay. Now I am going to solve question number 24. What is question number 24? The question number 24 is this. Anu takes 4 minutes to make one chapati. So you have to write the statement. Anu takes time to make one chapati. So how much? 4 minutes. 4 minutes. Next. So
total number of chapatis she will make in 32 minutes. 32 minutes. So 32 will be divided by 4. So division you have to show here. How many times 32 will go by? 4, 8 times. 4 is 32 and you subtract here 0 you will get. So what is your answer? 8. 8. Like this you have to write. Division answer you have to write here. The answer of division you have to write here and division you have to show inside your rough side in your copy. Okay. You have to show in your fair copy this division also. So like this you can solve exercise 28. Now I am going to tell you exercise 29. Exercise 29. So what is the first question? 36 divided by 3. So बेटा 36 को 3 से डिवाइड करना है. So 3 से how many टाइम पहले हम 3 को चेक करेंगे कितने बार में जाएंगे. 3 से 1 टाइम पे 3 जाएगा. 3 1 जा 3. Now next digit you will note down here 6. अब 3 से 6 कितने टाइम में जाएगा? 2 टाइम. 3 2 जा 6. Okay. So you have to write here quotient equal to 12 and remainder equal to 0. Okay, beta. Now next question. Now I am going to tell you question number 20. 3693 divided by 3. तो 3 से आप बेटा 3693 में डिवाइड करो. तो पहले 3 को चेक करो तो कितने बार में जाएगा? 1 टाइम. 3 1 जा 3. नाउ नेक्स्ट डिजिट यू विल नोट डाउन 6. हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो? 2 टाइम. 3 2 जा 6. नाउ नेक्स्ट डिजिट यू विल नोट डाउन 9. हाउ मेनी टाइम्स? 3 3 जा 9. अब कौन सा डिजिट नोट करेंगे बेटा? 3. तो 3 1 जा 3. Like this you have to solve. So quotient equal to 1231 and remainder equal to 0. Dear students, in each and every question you have to write quotient and remainder also. Okay. Now I am going to tell you exercise 31. 30. Exercise 30. So what is the first question of exercise 30? The first question is 57 divided by 3. So बेटा 3 से 5 कितने टाइम में जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. अब 6 अधिक हो जा रहा है तो आप कितने टाइम का टेबल ले जाएंगे? 1 टाइम. 5 से अधिक नहीं होना चाहिए बेटा. अब या तो 5 के इक्वल आए या तो 5 से कम आए, बट 5 से अधिक नहीं होना चाहिए. तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. आप देख रहे हैं कि 2 टाइम्स में 6 आ जा रहा है तो आप कितने टाइम्स में ले जाओगे? 1 टाइम. 3 1 जा 3. नाउ यू विल सबट्रैक्ट 5 minus 3 2. नेक्स्ट नंबर यू विल नोट डाउन 7. अब आप 7 को नोट करेंगे.
अब हम चेक करेंगे बेटा कि 3 से 27 कितने टाइम में जा रहा है. So you have already learned the table. 3 9 are 27. 9 10. 3 9 are 27. So what is quotient? Quotient equal to 19 and remainder equal to 0. If nothing is there, you can assume that there is 0. Okay. Now I am going to tell you. Question number 34. 9,432 divided by 8. So 9,432 divided by 8. अब बेटा आप चेक करेंगे 9 कितने टाइम्स में जाएगा. 8 से 9 कितने टाइम्स में जाएगा. 1 टाइम. 8 बन जाए 8, 8 2 या 16. तो 16 अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम 1 टाइम्स ले जाएंगे. 8 बन जा 8. तो 9 - 8 1. अब अगला डिजिट कौन सा नोट करेंगे आप. 4. अब 14 को चेक करेंगे कितने टाइम्स हो जाएगा. 8 2 या 16 अधिक हो जा रहा है. 8 3 या 24 ये भी अधिक हो जा रहा है. अब आप कितने बार ले जाओगे. नाउ यू विल डिवाइड इट बाय 1 टाइम. ओके. 8 बन जा 8. So, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 - 8 6. अगला डिजिट कौन सा नोट करेंगे बेटा 3. कितने टाइम हो जाएगा 63. कितने टाइम हो जाएगा 8 से. 8 7 या 56, 8 8 या 64. तो 7 टाइम हो जाएंगे. 30 - 6 7. 5 - 5 0. So there is no need to write 0 here. इस साइड में हम 0 नहीं लिखेंगे. 30 - 6 7. अब कौन सा डिजिट नोट करना है बेटा 2. तो 72 कितने टाइम्स में जाएगा 8 से. 8 9 या 72. So what is your quotient? Quotient is 1179 and remainder equal to 0. Okay students. Now I am going to give you question number 26. 356 divided by 4. So बेटा 4 से 356 में आप डिवाइड करेंगे. अब 4 का टेबल हम पढ़ेंगे. अब देखेंगे कि 35 कितने टाइम में आ रहा है. तो 4 8 या 32 एंड 4 9 या 36. तो 36 बेटा अधिक हो जा रहा है. तो कितने टाइम चले जाओगे यार 8 टाइम. 4 8 या 32. 5 - 2 = 3. अब अगला डिजिट 6 नोट करोगे. 4 9 या 36. So what is quotient? Quotient equal to 89 and remainder equal to 0. Now I am going to tell you next question. (34) 7,136 divided by 8. Now you will divide here. How many times will you go? 8 times. 8 is 64.
Next is 3 will be here. 8 9 ya 72. Next is this 8 ya 16. So what is percent? Percent equal to 892 and remainder equal to 0. Like this, you have to show the division in your fair copy. Okay. In each and every question, you have to show the division. Okay, students. So today you have to complete your copy till exercise 30. Okay. Okay. Thanks. Have a nice day.